Thank you, Jawad. It was a pleasure to listen to Faiza. Uh, I will start with what you आपने जो remark दिया, और it's very interesting. मुझे I'm often asked to come and lecture at the National College for Public Policy, जो नीपा पहले होता था, जिसमें Yeah. grade 20 के officers they are being trained to be promoted to 21. 21 is the federal secretary level, and हमेशा यही होता है कि 100 लोग ऑफिसर्स में से मुश्किल से 10-12 फीमेल्स। सिमिलरली एक और एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। द गवर्नमेंट बिफोर दिस फन पीडीएम की जो गवर्नमेंट थी, लेट मी से दैट, व्हेन इट टुक चार्ज, तो द प्राइम मिनिस्टर wanted to have a dialogue on economy to on his first week, and he invited all the top business leaders from the country, and 7 or 8 or 10 were picked, including me, to address the cabinet and all these people to, you see, say kabhi kya Pakistan mein, what should we do, what this new government should do to think move the things. तो मैंने अपनी स्पीच में भी मैं कहा, शायद प्राइम मिनिस्टर साहब ने माइंड भी किया हो, आई कुड सी a couple of CEOs sitting, female CEOs, but out of those 10 speakers, none of the speakers was a female. तो किसी ने इम्पोर्टेंट ही नहीं समझा कि while we have, या तो ना है ही नहीं। तो वो आई थिंक एक दिस इज ट्रू, दो इट इज चेंजिंग। फॉर एग्जाम्पल, I've had the opportunity to go and meet police officers, and now you see a lot of young ASPs who are female. You see a lot of assistant commissioners who are females. Achha, so having said that, I think and Faiza has very rightly addressed that this bias and this gap exists all over the world. But Pakistan, unfortunately, is probably at the bottom end. We have, मुझे तो ये लगता है हम पीछे चले गए। जो आपका अगर देखें जेंडर गैप इंडेक्स, we are 0.457. Only Sudan is below us. Even South Asia is 0.65 to 0.69. Sri Lanka, Bangladesh, India, they are ahead of us. तो ये जो पूरा ecosystem है, इससे while it is important that the business leaders जो हैं या CEOs जो आपका topic है, they do those interventions, but unless the whole ecosystem is there, things won't move at a pace where we would like it to move. तो एक तो इसको understand करने की जरूरत है। And मैं थोड़ा आपके एचआर से हटके भी एक बात करूंगा। देखिए, हमारे यहाँ इन आवर सोसाइटी अनफॉर्चुनेटली एक फीमेल का, एक लड़की का, द पर्पस और एग्जिस्टेंस जो है ना, उसका मेजर रोल है क्या कि ये शादी करेगी, रिप्रोडक्टिव होगी, एंड विल यू सी गिव बर्थ टू चिल्ड्रन. दैट इज द जनरल यू सी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अ गर्ल. आप विद दिस माइंडसेट एंड विद ऑल दी यू सी जो हैंडीकैप्स हैं हमारे यहाँ फीमेल एजुकेशन के बारे में, दी सोसाइटीज सपोर्ट टू यू सी वर्क, वो बहुत लैक करती है अब कुछ, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक कंपल्शन एंड ऑल्सो बिकॉज द गर्ल्स हैव डन माशाल्लाह सो वेल. यूनिवर्सिटीज में दे आर बीटिंग ऑन द मेरिट बॉयज, एंड देयर आर मोर गर्ल्स स्टडीइंग ऑल टाइप ऑफ, फ्रॉम इंजीनियरिंग टू साइंस टू, अब वो जो है ना स्टीरियोटाइप के जी सिर्फ मेडिसिन में जाना है या ये जो दो चार टीचिंग में जाना है, वो तो दैट हैज बीन ब्रोकन माशाल्लाह, एंड आई थिंक द गर्ल्स आर कमिंग अप. मगर हो क्या रहा है, where would you get the women leaders? आपको women leaders मिलेंगी तो आप रखेंगे ना, आ रहे हैं, if they are not, no leaders available, they are not professional senior enough and available, होता क्या है, they start their job and then they have to drop out because of the social compulsions. जॉब उनकी जो प्रोग्रेशन को, करियर को सपोर्ट नहीं करता. शादी हो गई, in-laws they don't want her to work, or the husband moves somewhere else. इमीडिएटली भी हम ये होता है एक्सपेक्टेशन कि चलो ये 1-2 साल में बच्चा हो जाएगा, बच्चे के साथ यू कांट. तो द गर्ल्स जो शुरू भी करती हैं, दे ड्रॉप आउट एट अ वेरी अर्ली स्टेज एंड दे डोंट गो. अच्छा, हम इसको, मैं जो कह रहा था एक और तनाजर, लेट्स लुक इट इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. इसका इसका हम लीडरशिप की बात करें, मैं वैसे विमेन एम्प्लॉयमेंट की, विमेन इन द वर्कफोर्स की बात अगर आप करें, बांग्लादेश टुडे इज 180 million and we are 240. We say, I don't know, maybe we are 280 or something. जो कि बांग्लादेश वाज, यू सी, हमारे से जब हम वी पार्ट वेज विद ईच अदर, बांग्लादेश की पॉपुलेशन ज्यादा थी हमारे से. व्हाट हैपेंड? इट इज बिकॉज दी उनकी वर्कफोर्स की एक मेजॉरिटी विमेन पे मुश्तमिल है,
the average marriageable age went up. फर्स्ट चाइल्ड की जो बर्थ है वो एज वेंट अप, 6-7 years का गैप आ गया. सो दी होल तो ये जो ओवरऑल इकोनॉमी पे इस चीज का असर है, आई थिंक इट्स ह्यूज, विच वी डोंट अंडरस्टैंड, विच वी डोंट अंडरस्टैंड. अब I think Faiza very rightly pointed out, you do need to have role models, which are there but very few. Mentorship opportunities nahi. Then you see the society. This also applies to West also, but more so in Pakistan. We have you see notions hain. Unfortunately, you see, to move up the ladder, आपको networking की भी जरूरत होती है. Not necessarily to, you see, gain advantage, but you see, you have to network. And networking opportunities with the executives, a female के लिए एक networking opportunities with the female group, maybe it's easier, but in a mixed group, पाकिस्तान के culture में is, you see, not taken, I would say, very, बहुत उसको pleasant नहीं समझा जाता, और वो एक inhibition होती है networking की, mentorship नहीं है, enabling environment नहीं है. बहुत ज्यादा if people are, you see, they want to promote it, बहुत सारे, तो इसलिए I think I don't doubt the intentions, but I think बहुत सारे लोग इसको इसलिए promote करते हैं कि to feel good, to tick a box कि okay, हम diversity and inclusion पे चल रहे हैं. But are you see, providing those enabling environments जिसमें बच्चियां move करें ऊपर? So first of all, the leadership has to believe in it. You have to do, unless, you see, by creating human resource manuals or bringing in you see regulations by the government or whatever, it's not going to change. You have to, you see, first of all, and it's going to take decades जब हम कुछ catch up करेंगे, but there is hope. मैं as you said, I will not take too much of time. I think Faiza has elaborated on many points, and I totally agree what she has said and what Azra just pointed out. We realized very early that unless you create that enabling environment for the girls to, you see, progress in their, हम बाहर से नहीं इतने लोग ला सकेंगे. We have to provide opportunity, because the industry in which हमारी जो core business है, उसमें female executives का आना क्या है कि जी marketing में आ जाएंगी, HR में आ जाएंगी, बहुत ज्यादा हुआ finance में आ जाएंगी. So हमने इस myth को भी break किया. You know, the girls can come and be on the floor, can be engineers, can be environmentalists. ये मेरी तो जब भी बात होती है, if I am asked to talk to girls who are inducted in our company, I tell them that as soon as you walk into the office or inside the company plant pe, you are no more a female or male. You're an executive or a manager or a vice president. That's it. So there has to be no distinction between ये concept है ना कि ये female executive है, या जैसे वो हमारे जमाने, अब तो शुक्र है कुछ चेंज हो गया, लेडी डॉक्टर है. What do you mean by a lady doctor? She's a doctor. तो ये चीजें थोड़ी सी मेरे ख्याल में थोड़ा ये माइंडसेट में चेंज. अच्छा, फिर टर्मिनोलॉजी, although it is symbolic है, but terminology matters a lot. The board का हेड जो चेयरमैन है, why भाई? Why can't मैं अगर फीमेल हो गई तो चेयरपर्सन कहेंगे, मेल चेयरमैन को चेयरपर्सन क्यों नहीं कह सकते आप? The language matters. I can be a chairperson. Why should I be? So आपने मुझे chairman कहा, but in our company now, it is designated as chairperson. The position is a chairperson position. It could be a male, it could be a female. तो ये symbolic है, but I think these things matter. ये फिर ये travel down करता है. तो अच्छा, we realized very early that we'll have to take some affirmative actions. We will have to provide that enabling environment in an industry which is typically not considered to be very conducive for females. तो हमने एक तो ये है कि in all our plants, all our offices, we have world class, we don't call them daycares, they are actually kindergartens. We take in kids from 6 months and we take them to 6 years. Law doesn't require that. And वो are top class kindergartens, और वहाँ पे whether you are a laborer, whether you are a manager, whether you are an executive, their kids can come in and they're trained teachers and Montessori teachers, and they do that. आज ही एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ. Rather yesterday, I was sitting in my office and I received a box of sweets. So I asked भी ये कहाँ से आया? उन्होंने कहा जी वो फलानी हमारी डिप्टी मैनेजर है,
she has cleared her chartered accountancy, and so I was busy. I said, okay, I'll call her tomorrow. तो आज मैंने उसको बुलाया. So she told me that, sir, when I joined the company, I had no idea that I'll be able to do it. I had done 20 papers, 2 मेरे रह गए. अगर मैं आपकी कंपनी में ना होती, मेरा बच्चा, मेरी शादी हो गई, वो यहाँ डे केयर में ना आ रहा होता, I could not have gone and taken those 2 papers. Today I am a chartered accountant. तो ये छोटी सी एग्जांपल है, बट इट रियली मैटर्स अ लॉट. आप हमारे यहाँ we have a reconnect policy, for example. Reconnect, what is reconnect policy? If a female has worked for 3 years in the company and she doesn't leave for commercial reasons but leaves for because of family reasons, शादी हो गई या कोई बच्चा की वजह से उनको नहीं सपोर्ट मिली and she can't really join the job, or she husband की ट्रांसफर हो गई है या पेरेंट्स की ट्रांसफर हो गई है and she wants to reconnect, we will always take her back, so that if it is not for a commercial reason with the ये छोटी छोटी चीजें इंटरवेंशन हैं. देन वी हैव अ अफर्मेटिव एक्शन. जैसे मैंने कहा ना, वी नीड टू डेवलप. अपने अगर फीमेल लीडर्स को डेवलप करना है तो आएंगे कहाँ से? सो लॉन्ग अगो व्हाट वी डिसाइडेड दैट एवरी ग्रेजुएट एंट्री वी टेक, इट कुड बी टेकन अनफेयर, मगर मेरे ख्याल में फॉर मार्जिनलाइज्ड सेक्टर्स यू हैव टू टेक अफर्मेटिव एक्शन. सो our graduate entry 50% have to be female girls. हमारे अगर इस दफा हमने 110 शायद ग्रेजुएट्स लिए हैं, 55 विल बी गर्ल्स. और हमारा इन सारी, एंड देन वी हैव एक्सटेंडेड usually maternity leave policy, and then we have a flexible, you see, for policy where the female executive or the manager or whatever, after childbirth, एक वैसे तो डे केयर हैं, but because if she wants to pick a flexible working week, she doesn't have to seek permission from her manager or her superior. She can do it on her own for till the child is 1 year old. She wants to work for 2 days a week, she wants to work 3 days a week or 5 days a week. It's her choice. She can keep on changing that so that they feel, you see, unko wo protection milti rahe. So बड़ी interesting statistic है हमारे यहाँ, जो है ना, retention rate after childbirth is 88%. If you go to other companies, you will see that unfortunately they have to drop out. So unless you give these girls the chance to move up, वो कैसे करेंगे? अच्छा, फिर 40% of our female executives are STEM. The SECP ने, rightly so, they had some years ago made it compulsory कि जी पहले उन्होंने listed companies में, public companies में कहते you should have one female director, and invariably वो यही है कि जी आप फैमिली में से किसी को डाल दें so that वो कंडीशन पूरी हो जाए. हमने what we decided in our previous board on the recommendations of the nomination committee, that part of our corporate governance policy, our board from next elections will have a minimum of 1/3 female directors. And today, after the election, we have 44%. Out of 9, 4 are female directors. 3 of them are independent directors, CEOs of their own companies. And the 4th one is an executive director. So all working women bringing in, और ये नहीं कि सिर्फ वो women हैं, they are bringing in their unique experiences, unique skill sets to the board. 4 out of the 5 HRC members जो है ना हमारे, they are female, headed by a female, फातिमा असद. So they अब वो जब आप पॉलिसीज को उनके कंट्रोल में देंगे और आप ये एक्सेप्ट करेंगे, 25% of our C-suite is female. I hope we can do it more, मगर हमें अभी वो मिल नहीं रहा. तो आपको बॉटम अप से बजाय टॉप डाउन अप्रोच के लिए भी आपको नीचे से सपोर्ट देनी पड़ेगी, so the girls are coming up. So हमारी होम ग्रोन लीडरशिप में से now 33% of our marketing leadership is hundreds of executives is female, और उनमें से most of them are home grown. They have risen to the level of you see that level के they joined as graduate trainees and now they are general managers or deputy general managers, or they are that level. तो ये जब तक अब ये और फिर yes obviously you need male allies and you have to continue, you see, telling the people that हमें ये करना है और ये important है, और
there is no difference between a female or a male in a company, and you can't pick कि जी इस फील्ड में तो आ सकती है फीमेल और इसमें नहीं आ सकती. It is, every field is open. So I think if we start believing in it, अब वो हम स्टैटिस्टिक्स हैं उसके काउंटर स्टैटिस्टिक्स भी कि जी आया इकोनॉमिक बेनिफिट ज्यादा होता है नहीं होता है. आई डोंट थिंक. एंड फाइजन ने भी बात की आई थिंक अबाउट एम्पैथी. okay, maybe they are more, sometimes they are more, they have more empathy than men. I think हमारे जो, मेरा पर्सनल व्यू ये है कि the problem with the capitalist system is कि हमने इसको गलत प्रैक्टिस किया है, इसमें से एम्पैथी को निकाल दिया है. We need to have more empathy, and if females have more empathy, then all the more reason that we should have more female leaders. कि आपको because जो सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर जो जब हम when we are talking about self interest and just making money, so that is creating this problem in the world, and we need to have that empathy for everybody else, for all the stakeholders, for our own employees. And I think empathy is good. We should not be you see इसके ऊपर हमें apologetic नहीं होना चाहिए कि females are more empathetic. We need more empathetic leaders. तो मैंने एग्जांपल्स ये दिए हैं, इस तरह से किए हैं मुल्क में. आई थिंक देयर इज दिस यंग लीडरशिप कमिंग अप, बट ये एनेबलिंग अगर एनवायरनमेंट नहीं होएगा, आप इफ द गर्ल्स कैन नॉट प्रोग्रेस इन देयर करियर्स, तो फिर आपको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फीमेल लीडरशिप ही मिलेगी, अवेलेबल ही नहीं होगी. तो हमें ये जो पूरा इकोसिस्टम है इसको चेंज करना है. योर if any university invites me to you see talk to their students or whatever, मेरी एक बात ये जरूर होती है तमाम बच्चियों से कि यू हैव टू पिक अप पार्टनर फॉर योरसेल्फ हु कैन बी प्राउड ऑफ योर अचीवमेंट्स, हु कैन सपोर्ट यू इन योर करियर. किसी ऐसे बंदे से शादी ना करना जो तुम्हारे से जेलस फील करे या तुम्हें सपोर्ट ना करे इन योर करियर. सो दीज आर आई थिंक ये हमें नीचे से आहिस्ता 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 बिल्डअप करना पड़ेगा. अनलेस वी डू दैट, ये इट्स नॉट गोइंग टू हैपन कि जी 1 2 4 5 कंपनियों में हो रहा है. But I think things are changing. Economic compulsions are coming in, जहाँ पे एक single earner, even in the middle class or upper middle class cannot receive. तो उसकी वजह से भी ये हो रहा है. मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ. Without you see, काफी देर हुई. We had a very, and she's still with us, mashallah. We had a very brilliant female executive, and she married one of our male executives. She's still working. He left because he wanted to do something of her own. तो आफ्टर शुरू में उनके पेरेंट्स को बहुत ज्यादा उस पर राजी नहीं थे. कुछ देर के बाद द गाय वो आई एक्ट एज अ मेंटर टू हिम. ही इज अ वेरी वंडरफुल जेंटलमैन. उसने मुझे कहा कि जी वो अब माय पेरेंट्स वांट, जो मेरा छोटा भाई है उसके लिए भी दे वांट अ वर्किंग गर्ल. जब उन्होंने देखा है कि इनके बच्चों का और जिस तरह से हाउ दे कैन डू इट, सो आई थिंक वो इससे भी आहिस्ता 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 तो थिंग्स आर चेंजिंग, सोसाइटी नॉर्म्स आर चेंजिंग, बट दे हैव टू प्रॉब्ली चेंज एट अ फास्टर पेस. हमें ये सारा इकोसिस्टम चेंज करना पड़ेगा विद इन द कॉर्पोरेट्स, आउटसाइड द कॉर्पोरेट्स. वी हैव टू प्रोवाइड दैट सपोर्ट. एंड आई हैव एब्सोल्युटली नो डाउट दैट मेरे और मैं थोड़ा सा आई थिंक मे बी फायदा हैज दैट एक्सपीरियंस. मैंने तो ये देखा कि जहां भी मैंने देखा है, whenever a female stands up, she speaks so well and with so much of confidence कि बल्कि शर्म आने लग पड़ती है कि यार वो she is so good. So I think ऐसी बात नहीं है. Maybe there is some, but they can do, females can do wonders. So I like stop that there. I think वरना बहुत सारी चीजें repeat हो जाएंगी, and I'll stop there. Thank you.